A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the second last chapter of your syllabus of the part B, that is an accounting ratio. In this chapter, we discuss there are basically four types of the accounting ratio. The first one is a activity ratio. Second will be a turnover ratio, third will be a profitability ratio, and fourth will be a solvency ratio. So after completing the second last chapter of your syllabus, let's we move to the next chapter of your syllabus, that is an financial statement analysis. And you know very well what do you mean by the financial statement analysis? Financial statement analysis refers to the analysis or interpretation of the available financial statement of company. It means जब भी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करती है। एनालाइज करने के लिए there are basically various types of the financial statement analysis, as well as in this video we discuss the limitation of the financial statement analysis. So you know very well, on upcoming 29 November, from 29 November 2020 आपके revision test start हो रहे हैं. So that's why you know very well it is a very important and easy chapter for your examination, and by study of such chapter you can easily gain a mark in the revision test too. So let us start this next chapter and revised all the types and limitation of the financial statement analysis once again. Okay, so let us start the class. This financial statement analysis. What is financial statement analysis? So in short word we can say that financial, it is also known as financial analysis. It is also known as financial analysis. Which types of analysis? Financial analysis. Analysis. The basic meaning of the financial statement analysis means, the basic meaning of the financial statement analysis is analysis and interpretation of analysis and interpretation of financial statement of what? Financial statement. This is the basic meaning of the, and by the help of the financial statement analysis, it is the process of, it is the process of, एक process है financial statement, it is a process of determining financial strength and weakness of the firm यानी इसमें क्या करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं, वीकनेस ऑफ द फर्म बाय स्ट्रेटेजिक relationship between, by establishing strategies, by establishing
strategic relationship relationship between the between the items of balance sheet and profit and loss statement and profit and loss statement. So this is a basic meaning of the financial statement analysis. So what is the basic meaning of the financial statement analysis? First line, it is also known as the financial analysis. ये क्या है? एक तरह का financial analysis है. The second line, it means the financial statement analysis means the analysis and interpretation of financial statement. इसमें हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं. एनालाइज मतलब क्रिटिकल इवेल्युएशन करना, और इंटरप्रिटेशन मतलब उससे रिजल्ट फाइंड आउट करना. इट इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, ये एक प्रोसेस है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल वीकनेस. कि हम फाइनेंशियली वे से कितने स्ट्रेंथफुल हैं और कितने वीक हैं, ये फाइंड आउट करते हैं. एज वेल एज कैसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी तो सवाल उठता है कि सर बताइए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करके कैसे कोई भी बंदा या कोई भी अकाउंटेंट कैसे किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता कर सकता है? कैसे? बाय एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप. यानी वो क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डिफरेंट आइटम्स, जो डिफरेंट आइटम्स हैं, उनके बीच में हम लोग कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं? एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप. किस तरह के रिलेशनशिप? एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप. So you can see that this is a basic meaning of the financial statement analysis. If we are talking about the next point of this chapter, so we can see that the types of financial statement analysis. So they are basically two types of financial statement analysis. So they are basically two types of the financial statement analysis. The first type is the analysis of the number one on the basis of मटेरियल यूज्ड. यानी कि उसको यूज कौन करेगा. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का दो तरीका होता है या दो काइंड्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड. यानी कि उस एनालिसिस को कौन यूज करेगा, उस डॉक्यूमेंट्स को कौन यूज करेगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ द material use we can classify the financial statement analysis on the basis of the material use. The two types, the first one is a external analysis and number second is a internal analysis. अब आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा. You know very well there are basically two types of the parties which are interested in the financial statement of the company or any other organization. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने के दो तरह की पार्टीज होती है. एक इंटरनल पार्टीज होती है और एक एक्सटर्नल पार्टीज होती है. सो जब हम कोई भी एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी एनालिसिस हम एक्सटर्नल यूजर के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल यूज के लिए मेक करते हैं. सो सच एनालिसिस विल बी नोन एज द external analysis of the financial statement analysis. So that's why there are basically two types of the financial statement analysis. The first classification that is on the basis of the material used. तो जो उसको यूज करेगा, अगर एक्सटर्नल बंदा यूज करेगा तो एक्सटर्नल एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे, अगर इंटरनल पार्टीज यूज करेंगे तो इंटरनल के लिए यूज करेंगे. सो बेसिकली what is external analysis? This analysis made by the external parties of the business such as investors, creditors, investors
and other analysis like a government. सो बेसिकली एक्सटर्नल एनालिसिस इन तरह की पार्टीज के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स को क्या पता करना है, क्रेडिटर्स को ये पता करना है कि जो भी मैंने उससे मटेरियल गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया है, क्या हम उसका पैसा रिपे कर पाएंगे, हम उसका पैसा कितने दिन में रिपे कर सकते हैं. ये उसके मन में बेसिकली क्वेश्चन रहेगा. किस रिगार्डिंग, कि कंपनी की वो क्या पता करना चाहेगा, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. स्ट्रेंथ क्या पता करना चाहेगा, कि क्रेडिटर ये चाहेगा, कि ये पता करना चाहेगा कि जो कंपनी ने उससे क्रेडिट पे गुड्स लिया है उसका वो पेमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है. सो दैट्स व्हाई द बेसिक एक्सटर्नल एनालिसिस सेज दैट व्हिच आर रिलेटेड टू द क्रेडिटर्स. इन्वेस्टर क्या पता करना चाहेगा, कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है उस पर प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट ये पता करना चाहिए कि प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है. जो टैक्सेस है जैसे लाइक गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लाइक इनकम टैक्स, तो कंपनी अपना प्रॉपर टैक्स पे कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एनालिसिस. ओके, अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के सेकेंड पार्ट पे, दैट इज द इंटरनल एनालिसिस. इंटरनल एनालिसिस इज मेड बाय द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज. ये जनरली कौन प्रिपेयर करता है, दैट इज द मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज अपने ग्रोथ के लिए प्रॉपरली चेक करना चाहता है कि उसकी कंपनी का ग्रो कितना है, क्योंकि एक एम्प्लॉय एक कंपनी के साथ तभी जुड़ा रहना चाहता है जब वो जानता होगा कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म वे में क्या करेगी, ग्रो अप करेगी, आगे बढ़ेगी. तो वो क्या करना चाहेगा, कंपनी में इन्वेस्ट, कंपनी के साथ जुड़ा रहना चाहेगा. इफ यू आर एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कभी रिलेट करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे. दैट्स व्हाई द इंटरनल एनालिसिस का डिमांड बेसिस आप समझ रहे हो कि क्यों एम्प्लॉय भी चाहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो, क्यों मैनेजमेंट चाहता है. मैनेजमेंट के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो वो फ्यूचर में क्या करेगा, डिसीजन लेगा. एम्प्लॉइज लाइक अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए अवेयर होते हैं, या कह सकते हो उनके लिए भी उनको जरूरत होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हो, ताकि वो कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक कर सके और बेसिकली एनालाइज कर सके, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट को उसको इंटरप्रिटेट कर सके. इंटरप्रिटेट मतलब होता है रिजल्ट को एक्सप्लेन करना, हिंदी में कहते हैं ना व्याख्या करना. इट मींस विद द हेल्प ऑफ द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, every accountant or the person who analyze the financial statement give the better result and uh, give the detail in the financial strength and weakness of the firm. यानी कंपनी की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है. The second type of the financial statement analysis, that is on the basis of process of analysis. The second one is on the basis of process of analysis. यानी हम एनालिसिस कैसे करना चाहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस के बेसिस पे भी हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस वी कैन एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग टू वे. इसके अकॉर्डिंग भी दो तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम लोग क्राइटेरिया बांट सकते हैं. द फर्स्ट वन इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, horizontal analysis. Number second is a vertical analysis. So one by one I will discuss each and every part. That is, what is horizontal analysis? It is a very common question. In this type of analysis, financial statement of different year are compared. Different year of compare. Please note down in your copy. Different year of compare. Different year are compared. अब देखिए, हम जब एनालाइज करते हैं ना, तो हमारे पास एक डाटा का बेस होता है. अगर वो बेस डिफरेंट ईयर को भी हम लोग लेते हैं, तो यानी कि सपोज कंपनी 2020 का एनालाइज करना चाहती है विद द हेल्प ऑफ 2019. तो आप देख रहे हो, यानी कंपनी अपने 2019 के बेसिस पे 2020 का एनालाइज करना चाहती है कि 2019 में कंपनी की पोजीशन क्या थी और 2020 में कंपनी की क्या पोजीशन है. सो यू कैन सी दैट दिस टाइप्स ऑफ एनालिसिस विल बी नोन एज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. यानी जब कंपनी डिफरेंट ईयर को क्या करती है, उसके बेसिस पे एनालाइज करती है, सो इट विल बी नोन एज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. एंड व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस?
वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है, कंपनी डिफरेंट ईयर को कंसीडर नहीं करती बल्कि डिफरेंट कंपनीज को एनालाइज करती है, यानी अपनी से मिलते जुलते, या कह सकते हो it such of analysis quantitative relation among various item of a period. In such analysis a single year on a particular date are reviewed analyzed in the proper device of as such ratio, and it is useful to compare one undertaking with another undertaking, one company to another company कह सकते हो. सो सिंपली वे वी कैन से दैट, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये बताना चाहूंगा कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मींस जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट ईयर को कंपेयर करते हैं डिफरेंट ईयर से, और वर्टिकल एनालिसिस मींस जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ अपने आप को कंपेयर करती है, सो इट विल बी नोन एज द वर्टिकल एनालिसिस. So you can see that they are basically two bases. They are basically two types of the financial statement analysis. The first type that is on the basis of material use, यानी उस financial statement को use कौन करेगा, who is a basic user of the financial statement analysis. And number second, on the basis of the process of analysis, यानी हम financial statement को analysis किस तरह से कर रहे हैं. The first basis is material use. You know very well. They are basically two user of the accounting information. चाहे वो हमारा financial statement हो, चाहे वो हमारा financial statement का analysis part हो. They are basically two types of the user which are interested in the financial statement of the company. The first, the internal user. Second one is the external user. So if any kind of financial statement analysis is useful for the external user, यानी अगर कोई एनालिसिस का पार्ट एक्सटर्नल यूजर के लिए यूजफुल है, तो सच एनालिसिस विल बी नोन एज द एक्सटर्नल एनालिसिस. एक्सटर्नल एनालिसिस लाइक any financial statement analysis which are done for the creditors, which are investors, which are government, as well as internal analysis of the financial statement is done by the management, employees and board of director for taking a decision of the company for the future perspective. And you know very well, with the help of financial statement, we determine the financial strength and weakness of the firm by establishing a strategic relationship between the different item of the balance sheet and statement of profit and loss. The second type of the financial statement analysis, that is on the basis of the process of analysis. So there are basically two types of the analysis, that is horizontal analysis and vertical analysis. When a company done the analysis with the help of the past record, यानी जब कोई कंपनी अपना एनालिसिस का पार्ट करती है, यानी अपना एनालाइज करती है डाटा को with the previous year, with the last few years, so such analysis will be known as the horizontal analysis. Like X company analyze its data with the past year. Suppose कंपनी क्या कर रही है, 2019 के डाटा के साथ 2020 के डाटा को एनालाइज कर रही है कि उस समय क्या था, इस समय क्या था, ग्रो है, अप है, डाउन है, या रेशियो, डिफरेंट टाइप से वो एनालिसिस का कोई भी तरीका है, बट बेस हमारा क्या है, लास्ट फ्यू इयर्स. So such analysis will be known as the horizontal analysis. And what is a vertical analysis? Vertical analysis are those analytical analysis in which company analyze its data with another company which are doing the same business. सपोज एक्स कंपनी भी वही बिजनेस कर रही है, उसका नेचर, उसकी कंपनी का नेचर भी वही है जो वाई कंपनी का है. सो 2020 का एक्स कंपनी का डाटा और 2020 का वाई कंपनी का डाटा, दोनों को आपस में क्या करना, एनालाइज करना कि वो कंपनी और मेरी कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है, टर्नओवर का डिफरेंस है, एक्सपेंस का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस कहां पर है, और डिफरेंस के कारण से हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा सक्सेसफुल है, कौन सी कंपनी ने अपना ज्यादा कंसंट्रेशन कहां रखा है. सो कंपनी भी क्या करेगी, अपना कंसंट्रेशन उसी वे में रहेगी. यानी बेसिकली we can see that, we can say that the horizontal analysis is an analysis in which financial statement of different years are compared. And when we are talking about the vertical analysis, so vertical analysis are those analysis in which we compare one undertaking with similar type of the
अनदर अंडरटेकिंग, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ अपने डाटा को क्या करती है, प्रॉपरली कंपेयर करती है. So, in the first session of this video, we discussed the financial statement analysis, and secondly, we discussed the types of the financial statement analysis. Now, we will move to the next part. Next part of this chapter, that is a limitation of analysis of financial statement. It is a very important topic of this critical chapter. So one by one we discussed what are the limitation of the analysis of the financial statement. Basically you can see that what are the meaning of the analysis of the financial statement, and at the end of this chapter now we will move to the very important part, that is a limitation of the financial statement analysis. यानी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, उससे कंक्लूजन डिसाइड करते हैं, तो कंक्लूजन डिसाइड करने के बाद उसमें कौन सी ऐसी कमी रह जाती है जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक पूरी तरह से एक्यूरेट तरीका नहीं है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिजल्ट निकाल सकें. यानी बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के बाद भी उससे जो रिजल्ट आते हैं वो पूरी तरह से 100% एक्यूरेट इसलिए नहीं होते क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, और वो लिमिटेशन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 100% श्योरिटी, 100% सक्सेस को इफेक्ट करता है. सो दीज आर द लिमिटेशन. द फर्स्ट लिमिटेशन इज changing, the first is a ignoring price level changes. The first limitation is ignoring price level changes. So if we are talking about the price level changes, you know very well, time to time, you know, day by day हमारा जो अकाउंटिंग सिनेरियो है, जो हमारा डाटा है, जो हमारा बेसिकली अगर हम लोग कहना चाहें कि हमारा जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है वो चेंज होता था. आज जो 2 रुपए की परचेजिंग पावर है, कल के 2 रुपए की परचेजिंग पावर से डिफरेंस है. सो कहीं ना कहीं हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी हम 2019 के बेसिस से अगर 2020 का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जिसे यू नो वेरी वेल, अगर 2020 का एनालाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे, विद द बेसिस ऑफ द डाटा ऑफ द 2019, तो कहीं ना कहीं 2019 का जो इन्फ्लेशन है और 2020 का जो इन्फ्लेशन है, प्राइस लेवल है, वो चेंज होगा. प्राइस लेवल मींस द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, वो कहीं ना कहीं चेंज होगा. सो हम कह नहीं सकते कि हम जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी एनालाइज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट होने के चांसेस काफी कम होते हैं. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी talking about the first limitation of the analysis of financial statement, that is due to the price level changes, you know, the purchasing power of the money, the inflation and deflation process of the market, of the economy, by due to the this changes, we cannot say that the financial statement analysis is 100% accurate. The second limitation is the changing accounting policy. It is a very important part because you know very well, time to time हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए और उसमें डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अकाउंटिंग पॉलिसीज बनी हुई है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस करने लगते हैं, जिससे एक ईयर का जो डाटा है वो दूसरे ईयर के डाटा के साथ इजीली कंपेयर नहीं हो सकता. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इसके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनाया गया है, दैट इज अ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, सॉरी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सेज दैट कि हमें अपने अकाउंटिंग मेथड एंड प्रोसेस को प्रॉपरली रूप से सेम बनाए रखना चाहिए. जब तक कोई हैवली चेंजेस ना हो, हैवली नीड ना हो, तब तक हमें अपने डाटा को, हमने अपने रूल्स को, अपने टेक्निक्स को चेंज नहीं करना चाहिए. बट यू नो वेरी वेल, चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर, बदलता रहता है. प्राइस लेवल पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ अकाउंटिंग पॉलिसी पे हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसपे अकाउंटेंट को ध्यान रखना चाहिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी में टाइम टू टाइम रैपिडली चेंज नहीं करना चाहिए, जहां जरूरत है वहां चेंज करें. बिकॉज ड्यू टू द दिस पार्ट, ड्यू टू द अकाउंटिंग पॉलिसी, यू नो वेरी वेल, हमारा रिकॉर्डिंग का तरीका अलग हो जाता है, हमारे टैक्सेशन का तरीका अलग हो जाता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका अलग हो जाता है, जिसके कारण हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस
100% श्योर नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता। द थर्ड वन इज अ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। डिफरेंट टेक्निक्स, यू नो वेरी वेल, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप देखो एनालिसिस में तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और ये भी एक तरह से लिमिटेशन है, और हमें ये क्लियरली पता नहीं होता है कि हम किस एनालिसिस, किस टेक्निक से हम प्रॉपरली अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। बिकॉज यू नो वेरी वेल, जब हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो सारे ऑप्शन हमें एक दूसरे के साथ कंफ्यूज करते हैं कि हमें किस टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए। बट यू नो वेरी वेल, ये मैं बता दूं आपको कि अगर आपने सही एनालिसिस के लिए सही टेक्निक इंप्लीमेंट की तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 100% एक्यूरेट रहेगा। अगर आपने गलत टेक्निक चूज करके एनालाइज करना चाहे, रिजल्ट निकालने की कोशिश की, तो भी गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि स्टेटमेंट ऑफ किसी कंपनी का प्रॉफिट निकालना है आपको, तो प्रॉफिट निकालने के लिए अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बनाओगे तभी ना प्रॉफिट निकलेगा। इट इज अ टेक्निक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का टेक्निक है। सो अगर आपने सही वे में सही टेक्निक अडॉप्ट कर ली, सो आपका रिजल्ट भी 100% एक्यूरेट आएगा। बाकी तो हम लोग आगे डिस्कस ही करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द एनालिसिस। द फोर्थ वन इज अ विंडो ड्रेसिंग। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ द फैक्ट्स। ये जनरली इट इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनेशन। विंडो ड्रेसिंग इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कवर अप बैड फाइनेंशियल, cover up bad financial position। बेसिकली अगर हम बात करें, सो व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग, विंडो मीन्स द खिड़की, एंड ड्रेसिंग मतलब विंडो को सजा देना। मैं इसका एक बहुत ही इजीली एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूँ। सपोज अगर आप देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो अपने घर की खिड़की से जो दिखने वाला अंदर का पार्ट होता है, घर के अंदर दिखने वाला जो पार्ट होता है, उसको लोग ब्यूटीफुली डेकोरेट कर देते हैं, ताकि बाहर से अगर इंसान विंडो में से अगर वो उस घर के अंदर देखेगा, तो विंडो तक का जो पार्ट है वो बहुत खूबसूरत लगेगा, कहेगा वाह कितना अच्छा घर है। वही कंपनीज भी करती है कि जो उसे अपने यूजर्स को दिखाना है, स्पेशली फॉर द एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर को तो सब पता होता है कंपनी की स्थिति क्या है। अगर उसे अपने एक्सटर्नल यूजर को इंप्रेस करना है, उसे अट्रैक्ट करना है, तो वो मैनिपुलेट करता है डाटा के साथ, यानी आपको बड़ी बड़ी बातें दिखाता है, आपको बड़ी बड़ी चीजें शो कराता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बिकॉज विंडो ड्रेसिंग कहीं ना कहीं हमारी बैड फाइनेंशियल पोजीशंस को कवर अप करती है। So that's why window dressing is a very bad limitation. It is a very important limitation of the analysis of financial statement. So at the end of this session, I want to say, I think the very important limitation of the financial statement is the limitation of financial statement. Sir, what is meaning of the limitation of the financial statement? अगर आप खुद सोचो, आप एनालाइज किसका कर रहे हो? वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एवरी अकाउंटेंट किसका एनालिसिस करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमी है, सो उसके एनालिसिस की भी वो कमी ऑटोमेटिक बन जाएगी। सपोज मैं ये कहूं कि अगर आप जनरल से लेजर में पोस्ट कर रहे हो, अगर जनरल गलत है तो लेजर ऑटोमेटिक क्या होगा? गलत हो जाएगा। लेजर से ट्राइबलेंस में पोस्ट कर रहे हो, लेजर गलत है, ट्राइबलेंस भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो एनालिसिस आप किसका कर रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन ऑटोमेटिक किसकी लिमिटेशन होगी? दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो वी कैन सी दैट all the limitation of the financial statement will also taken as the limitation of the analysis of the financial statement। यानी कि जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, वो सारी लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की भी लिमिटेशन होगी। लाइक अ क्वालिटेटिव, लैक ऑफ क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन, या कह सकते हो लैक ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू नो वेरी वेल कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई अगर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्वालिटेटिव चीजों को जगह नहीं दे रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमारे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव चीजों को छोड़ देगी और क्वांटिटेटिव चीजों को ग्रैब कर लेगी।
यानी सिर्फ डाटा या रिजल्ट जो निकलेगा वो किस बेसिस पे निकलेगा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटेटिव डाटा, यानी सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को एक्सप्रेस किया जाएगा, क्वालिटेटिव डाटा को छोड़ दिया जाएगा, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो डाटा पुटअप ही नहीं किया गया है। जैसे मैं कैलकुलेटर लूं, 2 + 2 = 4 होता है, मैं 2 को छोड़ दूं, बस 2 को लूं तो आंसर 2 ही आएगा, कितनी भी बड़ी मशीनरी क्यों ना हो। अगर हम इनपुट अच्छा नहीं करेंगे तो आउटपुट भी गलत आएगा। सो अगर हम लोग बात करें एनालिसिस किसका करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की बात कर रहे हैं, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशन होगी। So you can see that we discussed the 5 important limitation of the financial statement analysis, that is the ignoring price level changes, changing accounting policies, different techniques of analysis, window dressing, and the limitation of financial statement. So in this chapter, we discussed the first one is what is the financial statement analysis, what are the types of the financial statement analysis, and at last we discussed the limitation of analysis of the financial statement. So at the end of this chapter, I want to give you some homework for your revision. Is that the first homework for you कि इस चैप्टर के जितने भी बचे हुए थ्योरेटिकल पार्ट हैं, लाइक एडवांटेज, इंपॉर्टेंस कह सकते हो, एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एंड एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये दोनों आप लोग सेल्फ क्या कर लेना, स्टडी कर लेना। और इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी पॉइंट, एनी टॉपिक, एनी टर्म्स, अगर आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ने में कोई भी डाउट आएगा, सो प्लीज आस्क मी। ओके, so I hope today we cleared all the topics very easily, and I hope you will uh, understand what is your homework for today. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड टेक केयर, बाय बाय।